Now sapellin, phosphatidyl ethanolamine, phosphatidyl ethanolamine. Okay, they are known as sapellin. उसमें phosphatidyl inositol. So it is a stereoisomers of myoinositol, important component for cell membrane. ये phosphatidyl inositol जो है is an important component of cell membrane. Some of the drug actions are mediated by phosphatidyl inositol. तो जितने भी phospholipids है, whatever phospholipids are there, so they have a major biochemical role in your body. They are a very important component of your cell membrane. Then they are very important component of cell membrane. They also have different biochemical role in the body also. So we'll discuss it again in the upcoming slides. Let's see first here. Next phospholipid is a phosphatidylserine. So phosphatidylserine means glycerophospholipid plus serine. Next one is the sphingomyelins. So sphingosine is the amino alcohol present in the sphingospholipids. So these sphingospholipids will not contain a glycerol as alcohol. It will have a sphingosine as alcohol. Sphingosine is attached by amide linkage to fatty acid to produce ceramide. Ceramide is a secondary messenger for apoptosis. Apoptosis means प्रोग्राम्ड सेल डेथ. आपका एक सेल का लाइफ स्पैन होता है, आपके हर एक सेल का, उसका लाइफ स्पैन होने के बाद वो सेल का डेथ होता है. सो दैट इज अ प्रोग्राम सेल डेथ. सेरामाइड इज अ सेकेंडरी मैसेंजर इन apoptosis. It's also regular skin. It also regulates the skin water permeability. Next phospholipid is cardio cardiolipin. Next phospholipid is a cardiolipin. So as the name indicates, cardiolipin means it is a phospholipid isolated from heart muscle. Heart जो आपका heart muscle से आता है, cardiolipin consists of two molecule of phosphatidic acid held together by additional glycerol molecule और phosphate group. इसमें टू phosphatidic acid molecule होंगे, combine होंगे glycerol से, cardiolipin. These are the only phospholipids which possesses antigenic property. Cardiolipid जो है cardiolipid and sphingomyelins. So these are the examples of phospholipid which will have antigenic properties. मतलब ये अगर इंजर करेंगे किसी में तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएंगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, मतलब एनाफाइलैक्सिस. So these cardiolipin and ceramide sphingomyelins, these are known as a phospholipid which are antigenic in nature. Again next, functions of phospholipids. उसके functions क्या है? First, phospholipids, they are the component of cell membrane and they will regulate the membrane permeability. आपका जो cell membrane है, biological membrane, so it is made of mostly phospholipids. 90% cell membrane is made of phospholipid and phospholipid will regulate the permeability. किसको entry allow करना है, किसको नहीं करना है across the cell membrane, that is decided by the phospholipids. Okay, and that's why your cell membrane is lipid in nature, and that's why those drugs which have lipid solubility, they will easily get absorbed. That is the main reason behind that. Like solubilize, like will solubilize. So phospholipids are the component of cell membrane and they will regulate the membrane permeability. Again, they maintain a conformation of they maintain a conformation of electron transport chain component and cellular respiration. So phospholipid जो है वो ETC के लिए important है और respiration के लिए भी. Fatty liver, accumulation of fats in liver, that is known as a fatty liver. So this phospholipid, they can prevent the fatty liver, so that's why they are very important. So fatty liver is prevented by phospholipids. So accumulation of fat in the liver, it is prevented by phospholipids known as a lipoprotein factors. They are known as a lipoprotein factors, phospholipids. Again, absorption of fat is also a function of phospholipid. So phospholipid will help to absorb the lipids and fats. Again, they are the precursor for the synthesis of prostaglandin. So arachidonic acid जो है आपका arachidonic acid 20 carbon atom arachidonic acid. So that is a precursor for prostaglandin, prostacyclin, thromboxane 2, likewise that. Other complex lipid कौन से? Glycolipids. Glycolipids is the other complex lipid. So important part of cell membrane and nervous tissue. So glycolipids are the important part of cell membrane as well as nervous tissue. So cerebrocytes, gangliosides, we have seen this. Then lipoproteins means
macromolecular complexes with a lipid with protein. So high density protein is there, low density lipoprotein is there. Okay, then very low density lipoprotein is there. Chylomicrons are there. So high density lipoprotein जो होता है उसको that is also known as a good cholesterol. So high density lipoprotein means these lipoproteins will have low cholesterol level, low amount of cholesterol. So high density lipoprotein में cholesterol का amount बहुत ही कम होता है. That's why it is known as a good cholesterol. Then low density lipoprotein will have highest amount of cholesterol. These lipoprotein means lipid plus protein. So it is a complex of lipid plus protein. It will have highest amount of cholesterol. So that's why low density lipoprotein is known as a bad cholesterol and increased level of low density lipoprotein in your serum. आपके ब्लड में अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा हो गया तो you will be vulnerable, you will be prone to arteriosclerosis. ठीक है, so arteriosclerosis will be the disease. Okay, so your veins will be blocked. आपका जो coronary artery है वहां पे भी आपका ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा due to increased level of low density lipoprotein. Okay, that's why high density lipoprotein is known as a good cholesterol. L low density lipoprotein is known as a bad cholesterol. So increased level of LDL is associated with the arteriosclerosis. This was a question again in the GPAT. इसके ये भी क्वेश्चन था GPAT में. So increased level of low density lipoprotein, the increased level of LDL is associated with the arteriosclerosis. Then chylomicrons are there, very low density lipoprotein is there. We'll see it again. Then steroids. Steroids means it will have cyclopentanol per hydrophenanthrin ring structure. So cholesterol is the steroid steroid lipid. Steroid lipid कौन सा है? Steroidal lipid कौन सा है? Cholesterol. So it is abundant in the nervous system, cell membrane, and okay. So cholesterol is abundant in the nervous system and cell membrane. So we'll see again about the cholesterol in the detail. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है कैसा है बाद में देखेंगे. Then ergosterol is present in the ergosterol is a precursor for vitamin D which is present below the skin. आपके स्किन के नीचे विटामिन डी का सिंथेसिस होता है from ergosterol. So they are the steroid lipids. Okay, when you can see this is a phosphatidic acid. Glycerol देखो यहाँ पे glycerol होगा आपका. It's a glycerol. Ester of glycerol with phosphoric acid. ये PO4 जो है phosphoric acid है और कार्बन नंबर 1 पे esterified है फैटी एसिड, कार्बन नंबर 2 पे भी फैटी एसिड. So phosphatidic acid means fatty acid esterified with glycerol, first two carbon only C1C2 and phosphoric acid, that is a phosphatidic acid. Then this is the lecithin. Lecithin means phosphatidic acid plus choline base. ठीक है, phosphoric acid पे choline base अटैचमेंट होगा उसको बोलेंगे lecithins. सेपेलिन्स इसमें इथेनोलामाइन बेस है. डिफरेंस क्या है? ओनली इथेनोलामाइन. फॉस्फेटिडिल सेरिन में सिर्फ सेरिन जो अमाइनो एसिड है सेरिन वो है यहाँ पे. ठीक है, ऐसा. So these are the phospholipids. Sphingomyelin will look like this. So here again जो आपका phosphatidyl choline जो है same plus sphingomyelin ये. So structure are not much important. So steroid nucleus ये हो गया आपका steroid nucleus. उसको बोलेंगे cyclopentanol per hydrophenanthrin. So structure first. So ring A B C D cyclopentanol per hydrophenanthrin. So numbering will start from this ring 1. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this 10, then 11 12 13 14 15 16 17 hydro 7. Okay, so it is known as a cyclopentanol per hydrophenanthrin. So this is the steroid nucleus and all the steroidal drugs, steroidal hormone, okay, they are the derivative of steroid nucleus. Okay, for example this is the structure of cholesterol. Second structure कोलेस्ट्रॉल में क्या रहेगा? सो कोलेस्ट्रॉल में 3 पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपका. सो स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ कोलेस्ट्रॉल. सो कोलेस्ट्रॉल विल हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट थर्ड पोजीशन. ओके, देन एलिफेटिक साइड चेन, एलिफेटिक ऑक्टा of 8 carbon atom aliphatic side chain at the carbon number 70. इस 17 से लेके ये जो 8 कार्बन एटम साइड चेन है, 8 कार्बन एटम aliphatic side chain and double bond between 5 to 6. That is a cholesterol. It will have a molecular weight of C17
H46O, okay, C17H46O molecular formula for cholesterol. Okay, so again it is a insulating, it is a insulator, it insulate, it is a it is a insulating agent. It will act as an insulator in the nervous system. जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके लिए एक कोलेस्ट्रॉल का लेयर होता है, so that will act as an insulator during nerve impulse transmission. Cholesterol, okay, so increase the level of cholesterol in the body will cause arteriosclerosis. Cholesterol, it is a precursor for vitamin D. Now beta oxidation of fatty acid. So oxidation of fatty acid, okay, so whatever fatty acids are there in the body, they are metabolized, okay, they are oxidized to get energy. See, they your glucose is not there, glucose energy source, energy source is the main energy source is glucose. If glucose is not there, so fatty acids will be oxidized, okay, so and they are mostly oxidized by beta oxidation. Obviously there are alpha oxidation is also possible, omega oxidation is also possible. Beta oxidation of fatty acid is the most common. So fatty acids will be oxidized by beta oxidation most commonly. Okay? So beta oxidation of fatty acid means you can see here is the fatty acid, long chain fatty acid. So this COO minus group, then alpha beta carbonate. So acyl CoA will be attached over here. So thiokinase will catalyze the formation of acyl CoA from your fatty acid. Okay, so fatty acids will be activated to form a fatty acid acyl CoA, fatty acyl CoA. Okay, so activation will be done by thiokinase enzyme and it is in a cytosol only. जो सेल का आपका साइटोसोल होता है, साइटोसोल में एक्टिवेशन होगा. देन नाउ आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ acyl CoA, after activation of fatty acid, acyl CoA, fatty acid, fatty acyl CoA will be transported in the mitochondria by carnitine transport system. Then beta oxidation will start. Okay, so acyl CoA dehydrogenase will take acyl CoA and convert into trans-enoyl CoA. Okay, trans-enoyl CoA जो अल्फा एंड बीटा है उसके बीच में डबल बॉन्ड ला देगा ये acyl CoA dehydrogenase. So you call it as a trans-enoyl CoA. Okay, then trans-enoyl CoA hydroxylase will cause hydroxylation. यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन होगा मतलब यहाँ पे बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा. सो इनोइल CoA हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम विल कॉज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ दिस trans to इनोइल CoA and you will get a beta hydroxy acyl CoA. Here is a hydroxyl group. So again beta hydroxy acyl CoA will be dehydrogenated to form a acyl CoA, acyl CoA acetyl beta कीटोएसिटिल कोए. सो बीटा कीटोएसिटिल कोए. सो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसका डिहाइड्रोजनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ जाएगा. यहाँ पे एक NADPH बनता है आपका और यहाँ पे भी आपका एक यहाँ पे FADH बनता है, FADH बनता है. बीटा कीटोएसिल कोए, बीटा कीटोएसिल कोए, बीटा कीटोएसिल ट्रांसफरेज will split this beta ketoacyl CoA into acetyl CoA molecule and remaining carbon atom chain. So acetyl CoA will be released. One molecule of acetyl CoA will be released on each cycle of beta oxidation, and this acetyl CoA molecule will enter into Krebs cycle. Okay. Now whatever remaining side chain is there, fatty acyl CoA. Okay. So that will be again recycled in the beta oxidation. ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे पहले नंबर पे 16 कार्बन एटम वाला आपका फैटी एसिड है, तो एक बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में उसका एक एसिटिल कोई निकल जाएगा और बाकी जो 14 कार्बन एटम है, कार्बन एटम का साइड चेन है, वो फिर से बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा. ओके, सो 16 कार्बन एटम वाला जो फैटी एसिड है तो वो कितने साइकिल जाएगा, वो जाएगा आपका 7 साइकिल. ठीक है, मतलब पहले एक बार में क्या होगा, उसका एसिटिल कोई रिलीज होगा 2 कार्बन एटम. देखो, सो ईच ऑन ईच बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल there is a release of 2 कार्बन एटम फ्रैगमेंट, दैट इज नोन एज एसिटिल कोए. हर एक बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में आपको एसिटिल कोए रिलीज हो जाएगा एक. ठीक है, सो एंड बाकी का जो बचा है वो फिर से रिसाइकल हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे आपका एक ATP यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ असाइल फैटी एसिड. फैटी एसिड एक्टिवेशन, for the activation of fatty acid there is a one ATP required. Okay, and at this stage during the formation of trans-enoyl CoA,
one APDH molecule is released, and at this stage, during formation of acyl CoA, during the formation of beta ketoacetyl CoA, one NADPH molecule. So one NADH molecule will give you 3 ATP, one APDH molecule will give you 2 ATP. APDH का molecule जो होता है वो 2 ATP देता है, NADH का molecule 3 ATP देता है, ठीक है. So metabolism of fatty acid. So it is done by beta oxidation of fatty acid. Oxidation of fatty acid at a beta carbon atom, which result in the sequential removal of 2 carbon fragment known as acetyl CoA. हर एक साइकिल में 2 कार्बन एटम रिमूव होगा, ठीक है. It is carried out in the 3 steps. Beta oxidation of fatty acid is carried out in 3 steps. First one is the activation of fatty acid in the cytosol. Cytosol सेल के cytosol में ही एक्टिवेशन हो जाएगा उसका, and for activation ATP is required. Okay. Then activated fatty acid will be transported into mitochondria by carnitine shuttle. Then proper beta oxidation of fatty acid will be done in the mitochondrial matrix of cell. Okay, so activation of fatty acid. So it is catalyzed by thiokinase enzyme, acyl CoA synthetase. It is also known as acyl CoA synthetase or thiokinase to form a acyl CoA. Transport of this acyl CoA into mitochondria by specialized carnitine carrier system known as a carnitine shuttle that operates to transport the activated fatty acid from cytosol to mitochondria. Then proper beta oxidation of fatty acid in mitochondria. So oxidation by acyl CoA dehydrogenase, formation of double bond between alpha and beta, I have shown you. Then hydration by enoyl CoA. Enoyl CoA will hydrate, will remove the water molecule. Okay, so sorry, will cause hydroxylation. Okay, hydration means hydroxylation. So hydroxylation of double bond between alpha and beta. So beta hydroxy acetyl CoA will be there. Then again oxidation by beta hydroxy CoA dehydrogenase result in the formation of beta ketoacyl CoA and generate NADH. Then cleavage by beta ketoacyl CoA thiolase result in the liberation of 2 carbon atom fragment, that is a acetyl CoA and acyl CoA again. So new acyl CoA containing 2 carbon, new acetyl CoA containing 2 carbon atom, new acyl CoA containing 2 carbon atom less than the first cycle will be returned to beta oxidation. Carnitine shuttle is inhibited by malonyl CoA. जो carnitine transport system है that is inhibited by malonyl CoA. Okay, again यहाँ पे repeat कर रहा हूँ मैं. देखो आपका जो फैटी एसिड है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का जो फैटी एसिड है उसका एक्टिवेशन हो जाएगा. सो फैटी एसिड विल बी एक्टिवेटेड बाय थायोकाइनेज एंजाइम. सो फैटी एसिड विल बी एक्टिवेटेड बाय थायोकाइनेज टू फॉर्म फैटी असाइल कोए. सो व्हाटएवर फैटी, फॉर एग्जांपल अगर टेक एग्जांपल ऑफ पाल्मेटिक एसिड, अगर ये पाल्मेटिक एसिड है सो पाल्मेटिक एसिड विल बी एक्टिवेटेड बाय थायोकाइनेज टू फॉर्म ए पाल्मेटिक असाइल कोए. यहाँ पे एक एटीपी कंज्यूम हो जाएगा. Fatty acyl CoA will be converted into trans-enoyl CoA by acyl CoA dehydrogenase. यहाँ पे dehydration होगा, dehydrogenation होगा, मतलब ये अल्फा एंड बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, तो trans-enoyl CoA is taken up by enzyme known as enoyl CoA hydroxylase. हाइड्रोक्सिलेशन होगा यहाँ पे, तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा. यहाँ पे एक एपीडीएच मॉलिक्यूल मिलता है आपको. Trans-enoyl CoA will be converted to beta hydroxyacyl CoA. Then this will be taken up by enzyme beta hydroxyacyl CoA dehydrogenase. This beta ketoacyl CoA will be taken up by the acyl CoA acetyl transferase and it will be broken down into acetyl CoA molecule and acyl CoA. ठीक है, ये 2 कार्बन एटम का फ्रैगमेंट रिमूव हो जाएगा. 16 कार्बन एटम वाला पाल्मेटिक एसिड आप बन गया 14 कार्बन वाला. 14 कार्बन वाला ये फिर से रिटर्न जाएगा, यहाँ से फिर से एक आएगा, बनेगा 12 कार्बन, फिर से आ जाएगा, बनेगा 10, बनेगा 8, बनेगा 6, है ना, 4 3 4 2 एंड लास्ट. सो साइकिल्स विल बी रिपीटेड until all the carbon atom are oxidized. सो पाल्मेटिक एसिड जो होता है वो 16 कार्बन एटम वाला होता है. सो एनर्जेटिक्स एंड डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. सो palmitoleic acid, so it has a 16 number of carbon, so even carbon atom molecule. Okay, palmitoleic acid 16 carbon atom, so it will undergo 7 cycle of beta oxidation. पहले साइकिल में क्या होगा, 2 कार्बन एटम रिमूव होगा, रह गया 14, है ना. so it will undergo 7 cycle of beta oxidation, so it will release 7 APDH2, 7 NADH2, 8 acetyl CoA. okay, so एक
palmitoic एसिड के मॉलिक्यूल का बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो क्या क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 7 APDH2 मॉलिक्यूल, 7 NADH2 मॉलिक्यूल एंड 8 एसिटिल कोए मॉलिक्यूल, ठीक है। सो पहला वाला एंड 7 साइकिल वाला एक 8, सो 8 एसिटिल कोए मॉलिक्यूल, 7 APDH2 एंड 7 NADH2. So 1 APDH2 molecule will give you 2 ATP after ETC. 7 NADH molecule will give you 3 ATP. मतलब 7 APDH will give you 7 जो APDH2 है that will give you 14 ATP. 7 NADH2 molecule जो है that will give you 21 ATP and 8 acetyl CoA will give you 96 ATP. अब बोलेंगे 96 कहाँ से है? एक एसिटिल कोए मॉलिक्यूल क्रेब साइकिल में जाने के बाद कितना एटीपी देता है? 12 एटीपी है ना, 12 एटीपी मिलता है एंड 8 एसिटिल कोए 12 into 8 96. Okay, so 14 21 plus 96 and 2 ATP are utilized for activation at the time 2 minus. Okay, so 129 ATP will be there. So oxidation of palmitoleic acid will give you 129 ATP and this was question in GPAT 21. You can go and check the paper. So okay, so palmitoleic acid will under beta oxidation and will give you 129 ATP molecule. Okay, so this was question in GPAT 21. So 129 ATP. देखो APDH मॉलिक्यूल देगा आपको 2 ATP, यहाँ पे कितना जनरेट होता है 7, तो 7 into 14, ठीक है 14 ATP से 7 NADP DH molecule भी जनरेट होता है, 1 NADH molecule will give 3 ATP, so 3 into 7 21. Okay, and 8 acetyl CoA, 1 acetyl CoA molecule will give you 12 ATPs, so 96, 21 14 plus 21 plus 96. Okay, and 2 ATP are utilized for activation, so minus 2, so it will come to 129. So one molecule of palmitoleic acid, one molecule of palmitoleic acid will give you 129 ATP under beta oxidation. Okay, this was question in GPAT 21. वैसे ही आप देखो 18 कार्बन एटम वाला अगर होगा, so if any 18 कार्बन एटम molecule of fatty acid will go beta oxidation, तो उसमें कितना ATP मिलेगा बोलो? So if 18 carbon atom fatty acid chain will undergo beta oxidation of fatty acid, then how many number of ATP you will get? देखो 16 कार्बन एटम वाला कितना दे रहा है 129, तो 18 कार्बन एटम वाला कितना देगा? एक एडिशनल एसिटिल कोए देगा ना, तो एडिशनल एसिटिल कोए मतलब 12 ATP ऐड करो। 20 कार्बन एटम वाला कितना देगा आपको? 20 मतलब कितना, ठीक है 20 मतलब 2 एसिटिल कोए एक्स्ट्रा आएगा आपका, तो 2 एसिटिल कोए एक्स्ट्रा आएगा, तो वो जो 2 एसिटिल कोए का 12 ATP, 2 NADH का 6 ATP, 2 APDH का 4 ATP, वो ऐड करके बोलो ना मुझे। सो you can easily predict number of ATPs, energetics of lipids, if they have asked any number of अगर आपको जीपीएट में पूछा कि एराचिडोनिक एसिड अगर बीटा ऑक्सीडेशन होगा एराचिडोनिक एसिड का, if एराचिडोनिक एसिड will undergo beta oxidation, how many number of ATP will be given? So 20 कार्बन, एराचिडोनिक एसिड क्या है 20 कार्बन एटम, तो फर्स्ट तो 16 कार्बन एटम वाला में कितना मिलता है आपको मालूम है? 7 APDH2 मिलता है, 7 NADH2 मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये 7 साइकिल। अब 20 कार्बन एटम वाला कितना साइकिल जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन का? कितना साइकिल होगा 20 कार्बन एटम वाला फैटी एसिड का? सो 20 कार्बन एटम फैटी एसिड विल अंडरगो, yes come 20 carbon atom fatty acid will undergo 19 yes 9 cycle of your fatty acid, okay, beta oxidation of fatty acid. So multiply, so 9 APDH2, 9 NADH2 and 10 acetyl CoA, 9 APDH2, 9 NADH2 and 10 acetyl CoA. So you can easily calculate 2 minus 2 utilized for activation. So you can easily calculate the energetics of beta oxidation of fatty acid if they have asked anything, ठीक है, कुछ भी पूछा, palmitoleic एसिड का पूछा या फिर आपका अरेस्टोनिक एसिड का पूछा या फिर लिनोलेनिक एसिड का पूछा, डजंट मैटर, आप कैलकुलेट कर सकते। ऑड कार्बन एटम मॉलिक्यूल और ऑड कार्बन एटम मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड विल अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन एज पर द अबव। जो देखो ये जो 16 कार्बन एटम वाला था, इट वाज अ इवन कार्बन एटम, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अ इवन फ्रैगमेंट्स, you are getting acetyl CoA regularly, okay, but if the fatty acid is of odd carbon atom, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो लास्ट साइकिल होगा आपका, सो लास्ट साइकिल रिसाइकिल जब होता है बीटा ऑक्सीडेशन में, सो लास्ट यू विल नॉट गेट acetyl CoA molecule, you will get a propenyl CoA molecule, okay, lastly you will get a propenyl CoA. So odd carbon atom containing fatty acid will go undergo oxidation as per the above, but only last molecule will be propenyl CoA instead of
acyl CoA, which is this propenyl CoA later gets converted into methyl malonyl CoA by mutase enzyme and it is dependent on vitamin B12. ये बाद में, लेकिन nobody is going to ask you the energetics of odd carbon fatty acid. Okay, they will ask you either 16 carbon atom, 18 carbon atom, 20 carbon atom. Oxidation of unsaturated fatty acid in general provides less energy than saturated fatty acids. Then alpha oxidation of fatty acids, that is the removal of one carbon atom unit at a time of oxidation of alpha carbon atom. And omega oxidation is also possible, but mostly fats are metabolized by beta oxidation of fatty acid. Now there are certain disorders related to beta oxidation of fatty acid. First one is sudden infant death syndrome. Sudden infant death syndrome, ठीक है. So this was, इसके ऊपर जीपेट 2019 में क्वेश्चन आया था. Sudden infant death syndrome is due to the blockage of beta oxidation of fatty acid. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था जीपेट 2019 में. So question was like that, sudden infant death syndrome is due to the blockage of one of the following metabolic cycle. उसके ऊपर ऑप्शन थे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यूरिया साइकिल, ऐसे ऑप्शन थे. आंसर वाज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. So sudden infant death syndrome is the due to the blockage of beta oxidation of fatty acid. Remember. So what is it? So it is beta. It is a blockage of beta oxidation of fatty acid. So unexpected death of infants overnight. बच्चों को रात में ही मर जाना. 10% of sudden infant death syndrome is because of the deficiency in the medium chain acyl CoA dehydrogenase. जो acyl CoA dehydrogenase enzyme होता है in the second step of your beta oxidation, so that is deficient over here, and because of that there is no beta oxidation of fatty acids. Okay, and that's why this sudden infant death syndrome is there. The enzyme defect occurs in the 1 in 10,000 births or 10,000 patients. 10,000 पेशेंट में से एक पेशेंट का ये आ जाता है डिफेक्ट. Sudden infant death syndrome is because of the blockage of beta oxidation of fatty acid. Soon after the feeding or eating for babies, glucose is the source of energy. After a few hours, the glucose level decreases. The fatty acid oxidation must start simultaneously to meet the demand of increased energy of body. क्या होता है इसमें देखो कि जैसे जो इन्फेंट्स होते हैं, जैसे अभी अभी जन्मा है कोई बच्चा, ठीक है, अभी अभी बच्चा कोई जन्म लिया है इसने, इट इज अ इन्फेंट. सो व्हेन इट वाज इन अ womb of mother, जब बच्चा जो बच्चा है जो पहले जो पेट में था उस टाइम पे क्या होता है कि सो मदर एंड फिटस इज कनेक्टेड बाय अम्बिलिकल कॉर्ड. वट एवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू दैट फिटस इज गिवन बाय मदर्स ब्लड. सो ग्लूकोज जो भी लग रहा है मदर के ब्लड से जा रहा है. व्हेन देयर इज अ डिलीवरी, व्हेन बर्थ इज देयर, व्हेन द फिटस कम्स इन द दिस वर्ल्ड, एट दैट टाइम सो उसका जो भी एनर्जी है वो तो खत्म हो चुका है, तो उसका एनर्जी खत्म होता है. और जैसे ही उसको फीड करता है, फीडिंग, सो इफ ही sucks any milk from mothers, soon after the finishing the energy, तो वो जो मिल्क है उसमें जितना भी ग्लूकोज है वगैरह वो फिनिश होने के बाद में क्या है, सो बाद में दैट दैट चाइल्ड शुड स्टार्ट द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. ओके, सो उसके उसके बॉडी ने बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड स्टार्ट करना चाहिए फॉर मोर एनर्जी. Due to blockage of this beta oxidation of fatty acid, the body will not get the energy and that infant will die. So that is known as a sudden infant death syndrome. This was question in GPAT 2019. Then again next disorder is Jamaican vomiting sickness. Jamaican vomiting sickness. It is characterized by hypoglycemia, vomiting, convulsions, coma and death. It is caused by eating the unripe food of ackee. एकी फ्रूट जो होता है अनराइप कच्चा एकी फ्रूट खाया, उसमें एक केमिकल होता है नोन एज अ टॉक्सिक अमाइनो हाइपोग्लाइसिन ए. टॉक्सिक अमाइनो एसिड होता है उसमें हाइपोग्लाइसिन ए. अनराइप एकी फ्रूट्स consist of hypoglycin A, which is a toxic amino acid, and this inhibit the acyl CoA dehydrogenase, and that's why it will block the your fatty acid oxidation. Okay, therefore block the beta oxidation of fatty acid, and that is Jamaican vomiting syndrome. जमाइकन वोमिटिंग सिंड्रोम. ये एक्की फ्रूट जो होता है वो जमाइका में होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जमाइकन वोमिटिंग सिकनेस. सो बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बाय वन टॉक्सिक अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द एक्की फ्रूट नोन एज हाइपोग्लाइसिन ए. देन मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया. मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया, that is again due to deficiency of vitamin B12 and decrease the efficiency of
डाइमिथाइल मेलानिल म्यूटेज, एक एंजाइम इसमें डिफिशिएंट होता है। झेलवेगर सिंड्रोम क्या होता है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज ऑफ absence of peroxyzyme in the tissue. Zellweger syndrome में क्या होता है? There is a deficiency of peroxine enzyme in the tissue, and that's why a individual cannot oxidize long chain fatty acids. And this disease is also known as a cerebrohepato cerebrohepatorenal syndrome. Okay, so this Zellweger syndrome is also known as cerebrohepatorenal syndrome. There is a deficiency of enzyme peroximes in the tissue, and that's why a body of that person will not be able to metabolize the long chain fatty acid. And next one is the Repsom's disease. Repsom's disease. It is a rare disease, but it is a severe neurological disorder characterized by cerebral ataxia, peripheral neuropathy. So, patient accumulates a large quantity of unusual fatty acid like phytanic acid. It is caused by a defect in the alpha oxidation due to deficiency of enzyme alpha oxidase. So, Repsom's disease में क्या होता है? It is a disease due to blockage of अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन जो क्या होता है? बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एंड जमाइकन vomiting sickness. Okay, these are the two disorders because of blockage of beta oxidation of fatty acid. Now because of blockage of alpha oxidation of fatty acid, there is a Repsom's disease. तो इसमें अल्फा ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। पेशेंट शुड नॉट कंज्यूम क्लोरोफिल or green leafy vegetable. Those patients which are suffering from Repsom's disease should not consume chlorophyll. Repsom's disease is because of the blockage of alpha oxidation. Next one is the oxidation of fatty acid and metabolic water. उसका relation क्या है? Metabolic water, and what is the relation between oxidation of fatty acid and metabolic water? So fatty acid oxidation accompanied by production of water, which is referred as a metabolic water. जिससे fatty acid का oxidation होगा, कुछ water molecule release होता है. So that water is known as a metabolic water. I have told you. So camels can store lipid in the hump. ऊँट होते हैं, ऊँट के जो पीठ पे एक बड़ा वाला सा होता है, मार जो गर्दन होती है उसकी, उसको बोलते हैं हम्प। जो बड़ा वाला गर्दन होता है वो गर्दन के ऊपर रहता है हम्प. So camel can store lipid in the hump, which is a good source of water besides the energy supply. And for this reason, camel can travel in desert for a long period of time, even without food and water. Again, kangaroo जो होते हैं, kangaroo rat is a small animal that believed to live initially without water. So जो kangaroo rat होता है, that can live initially without water because of the rats only. Okay. Again, a elephant can tolerate large cold or hot condition because of the fatty layer below the skin of elephant. Again, there are certain fish which can live in the 0 degree Celsius. अगर वो मतलब if there is a condensation of water, if there is a total ice, still some kind of fish are able to live in that condition also because of this, because of only fatty acids. Okay. Disease of sphingolipid storage disease. Okay, one is a Niemann-Pick disease. So these diseases are not much important, but you should know the names defective enzymes. Okay, Niemann-Pick disease. There is a deficiency of sphingomyelin. जो स्पिंगोमाइलिन्स होते हैं उनका भी मेटाबॉलिज्म होता है. So deficiency of sphingomyelin will cause you Niemann-Pick disease. So symptoms are like enlargement of liver, spleen, mental retardation. Farber's disease. It is due to deficiency of ceramidase. Ceramidase का deficiency है तो Farber's disease होगा. There is a painful and deformed joints. आपके जो joints है वो deform हो जाएंगे, मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे. ठीक है. It is known as a Farber's disease due to deficiency of ceramidase. Then Gaucher's disease due to deficiency of beta glucosidase. So enlargement of liver, spleen, osteoporosis, and mental retardation. Then Krebs disease due to deficiency of beta galactosidase. Deficiency of beta galactosidase. Krebs disease. So absence of myelin formation. myelin जो होता है नर्व का वो कम हो जाएगा in the liver and spleen enlargement. लिवर का साइज बड़ा होगा, स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाएगा. मेंटल रिटार्डेशन. So these are the symptoms of your Krebs disease.
Then hyperlipidemias, different type of hyperlipidemias. So increase the level of lipids in your blood or serum. That is known as a lipidemias. Okay, so hyperlipidemia. Different types of hyperlipidemias. This is important again. इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था. So I have summarized over here types of hyperlipidemias. So type first, type second. First hyperlipidemia. They are known as a lipoprotein lipase deficiency. Type first hyperlipidemia is because of the lipoprotein lipase deficiency. मतलब टाइप फर्स्ट हाइपरलिपिडेमिया में क्या होता है कि लिपोप्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होगा आपका, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज लिपोप्रोटीन इन द chylomicrons, raised triglyceride levels in the serum. Okay, and this may be associated with the arteriosclerosis. इसके ऊपर मतलब टाइप फर्स्ट हाइपरलिपिडेमिया अगर हो गया है तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है आपको. आर्थेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या है, ब्लॉकेज ऑफ योर कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी के इंटीमा जो इनर लेयर होता है कोरोनरी आर्टरी का, उसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट्स. सो दिस cholesterol and fats will be deposited inside the coronary artery and there will be a blockage of blood to the heart. That is known as a arteriosclerosis. So lipoproteinemia type 1, that is because of deficiency of lipoprotein lipase. And hyperlipidemia, okay, type second A, defect in the low density lipoprotein receptor. So there is increase in the low density lipoprotein level, increase in the cholesterol level, and that is the most high, very high. It is a risk of atherosclerosis is very high in case of type second A hyperlipidemia. टाइप सेकंड ए हाइपरलिपिडिया में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और उससे ज्यादा रिस्क है आपको आर्थेरोस्क्लेरोसिस का. टाइप 3 हाइपरलिपिडेमिया, इट इज बिकॉज ऑफ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्रोटीन बी. ओवर प्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्रोटीन बी इज देयर इन अ टाइप सेकंड बी hyperlipidemia. So again here increase the level of low density lipoprotein, very low density lipoprotein, increased level of triglycerides and cholesterol in the plasma. So again it is a very high risk of atherosclerosis. Type 3 hyperlipidemia is known as a broad beta disease. Type 3 hyperlipidemia is known as a broad beta disease. So here intermediate density lipoprotein will be increased in the इसका level increased हो जाएगा. So triglycerides and cholesterol will be increased in the serum. Again a very high risk of atherosclerosis and arteriosclerosis of peripheral. Type 4 lipoproteinemia, hyperlipoproteinemia, lipidemia. Type 4 lipidemia, hyperlipidemia is known as because of overproduction of triglycerides. It is because of overproduction of triglycerides in the liver. So level of very low density lipoprotein will be increased in the lipoprotein. Triglycerides will be increased in the serum. It may or may not be associated with the risk of atherosclerosis. ये उतना डेंजर नहीं है आपका. टाइप 5 हाइपरलिपिडेमिया इज ड्यू टू द टाइप 5 हाइपरलिपिडेमिया में क्या होता है कि इंक्रीज लेवल ऑफ chylomicrons and very low density lipoprotein triglycerides in the lipoprotein and increased level of triglycerides in the serum. It will again may be or may not be associated with the risk of atherosclerosis. तो आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि टाइप सेकंड ए हाइपरलिपिडेमिया, टाइप second B hyperlipidemia, then type 3 hyperlipidemia. These three hyperlipidemia are having highest risk of atherosclerosis. बाकी सब कुछ याद नहीं रखना आपको, इससे भी इतना याद रखना है. टाइप सेकंड हाइपरलिपिडेमिया, टाइप सेकंड बी, टाइप सेकंड ए एंड टाइप 3 hyperlipidemia, they are associated with the high risk of atherosclerosis. Now next one is obesity. What do you mean by obesity? Increase in the body weight due to excessive fat deposition in the body. There is nothing but the obesity. There are different factors which are responsible for the obesity. For example, lack of exercise, then overeating. खाते रहिए, खाने की वजह से obesity हो जाएगी. It can be easily measured by body mass index. It is a measure for obesity. Mass index. So body mass index is equal to weight in kilogram divided by height in meter square. This is the reliable measure for obesity.
There are different obesity. There are different reasons for obesity. Virus induced obesity like एडिनो वायरस का इन्फेक्शन अगर हो गया उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी आपकी बॉडी और दैट एंटीबॉडी गेट डिपॉजिटेड इन द एडिपोसाइट्स एंड विल प्रोड्यूस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ लेप्टिन प्रोटीन दैट इज इंक्रीज द ओबेसिटी इसकी वजह से भी ओबेसिटी होता है हाइपो हाइपोलिपोप्रोटीनिमिया जब आपका बॉडी का लिपिड लेवल कम होगा हाइपोलिपोप्रोटीनिमिया मींस लो लेवल ऑफ लिपोप्रोटीन इन योर बॉडी so there are also type there are different types that is not much important ये मेरे बुक में भी दिया है मैंने आप पढ़ लो and fatty liver means what accumulation of fatty acids in the liver okay that is known as a fatty liver is associated with the increased triglyceride levels in the blood then in case of diabetes mellitus also starvation बहुत दिन तक आपने खाना नहीं खाया तो chronic alcoholism high fat diet these are the risk factor for a fatty liver. Fatty liver is associated with the choline deficiency also. Okay, fatty liver can be prevented by phospholipids only.